Hello, guys, you want to learn about project management and the softwares used in the project management planning field. So this channel is for you. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइमावेरा P6 सॉफ्टवेयर, वाई प्राइमावेरा P6 सॉफ्टवेयर, प्राइमावेरा के ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, इसका मार्केट शेयर कितना है, इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। और अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में कदम रख रहे हो तो देन यू हैव टू नो दैट Primavera software is the best software used by the enterprise portfolio project management companies. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली स्लाइड पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर। प्राइमावेरा P6 जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसको ओरेकल ने डेवलप किया है, और जब आप इसके फीचर्स, इसके यूजेज के बारे में देखेंगे तो देन यू गॉट टू नो कि दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग सॉफ्टवेयर इन द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इंडस्ट्री। अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये है कि प्राइमावेरा जो है वो EPPM सॉफ्टवेयर है। अब EPPM सॉफ्टवेयर कौन सा है कि ये एंटरप्राइज पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एंटरप्राइज पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर वो होता है जो बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। एंटरप्राइज लेवल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि एविएशन का प्रोजेक्ट हो गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कि बड़े मॉल्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो गया, जैसे कि आपके स्पेस या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट हो गए, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के एंटरप्राइज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेवल के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो प्राइमावेरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस अगर आप बहुत ही एंटरप्राइज लेवल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बड़े प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, जिसका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्टिनेंटल बेस है और इस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री है। अगर आपके प्रोजेक्ट छोटे हैं, वेरी मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन, तो देन दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमावेरा इज़ अ कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन दैट इज़ specifically designed to help organizations effectively plan, execute and control projects, thereby improving project outcome and maximizing efficiency. अब अगर आपके पास एक ब्लूप्रिंट हो, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट करें कोई भी प्रोजेक्ट, तो देन द एफिकेसी ऑफ दैट प्रोजेक्ट विल बी मैक्सिमम एंड योर चांसेस टू हैव सक्सेस इन दोज प्रोजेक्ट डिलीवरी इज़ मैक्सिमम। लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ प्राइमावेरा P6 का वो ये है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ डायनामिक एंड कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द enterprise portfolio project management solution. So this is dynamic irrespective of the industry. You can use it in aviation sector, you can use it in the manufacturing sector, you can use it in the construction field or technical field, any field you want to implement any project, you want to initiate any project life cycle, you can use this enterprise level solution which is Primavera P6. Next slide है कि why Primavera P6 software, why not other softwares like Microsoft Project, like Trello, like Mondays, like Smartsheet, or even other cloud solutions that are readily available to provide you the project management, planning and execution controls. So the answer to this question is the way the Primavera software is providing you the enhanced functionality for the project planning, for the management of your resources, for scheduling, for the cost management operations, risk management, evaluation and collaboration, and eventually the reporting functionality which is provided by the Primavera software is worth it. You are gonna spend thousands of dollars to have the annual subscription, but it is worth it when it comes to project orientation and project planning. अब project planning की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर you can create the project plans, you can define your activities, you can have the set durations for all of your tasks, you can assign resources for those activities and establish dependencies and relationships based on your tasks. अब हम इसको practically जब करेंगे then you got to know that how you are going to create the planning, how you're going to initiate your plans, defining the activities and set durations, ये किस तरह करते हैं we got to know later on in the practical demonstrations. Then second point है resource management, जिसके अंदर आपका Primavera सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि you can allocate resources, जिसके अंदर आपकी मैन पावर आ जाती है, जिसके अंदर इक्विपमेंट आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, टू द टास्क्स एंड टास्क रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो कि आपके एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में है, वो आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। यानी कि आपकी मैपिंग होगी बिटवीन योर मैन पावर, इक्विपमेंट और आपके टास्क के दरमियान।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है when there is a handy situation, you have less resources available and you have multiple activities on the pending side, which is actually giving you the lags in the project. और lags जो होते हैं, they are not acceptable in the project anymore. Nowadays, if you are talking about lags, you have huge penalties by the stakeholders, by the customers. थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका scheduling. तो प्राइमावेरा जो है, it can facilitate you for the project scheduling, जिसके अंदर आप वेरियस टेक्निक्स और वेरियस फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपका क्रिटिकल पाथ मेथड आ जाता है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक आ जाती है, जिसको हम पर्ट भी कहते हैं. अब ये कौन सी टेक्निक्स हैं, जब हम इसको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे इन द वीडियो, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करेंगे कि किस तरह आपने क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना है, किस तरह आपने प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन टेक्निक को यूज़ करना है. तो देन यू गॉट टू नो कि व्हाट आर दो स्केजुलिंग टेक्निक्स और ये कितनी आपको एडवांटेज देती हैं विद इन द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज़ वर्सेटाइल इन गिविंग यू द बेस्ट फंक्शनैलिटी टू ट्रैक योर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बजटिंग. अब आप जब इसको जनरेट कॉस्ट करते हो, इसके अंदर कोई भी कॉस्ट इनपुट करते हो, तो इट विल गिव यू इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको रिपोर्ट्स देती है, ताकि आप मॉनिटर कर सको अपनी प्रोजेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एज यू गो विद द प्रोजेक्ट फ्लो, जिसके अंदर आपकी इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, उसके बाद आपकी चेंज मैनेजमेंट है. तो विद द गो यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल रिपोर्ट्स विच विल गिव यू इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सो ये एक बहुत ही हैंडी मैनेजमेंट टूल है. इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है, दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट. तो सॉफ्टवेयर P6 जो बनाया गया था, इट हैज़ एन इमेंस कैपेबिलिटी to enable you people to identify, assess and also mitigate at the same time the project risks and incorporate risk management strategies जो कि आपके project phases के अंदर repeatedly आप उनको experience करते हो. तो ये भी एक बहुत ही handy tool है, apart from what I already talk about the risk management and reporting for those financial outcomes. तो risk management भी एक बहुत ही एडवांस लेवल का फीचर है, विच इज़ गिविंग एन एज टू प्राइमावेरा P6. इसके बाद आ जाता है कोलैबोरेशन. सो प्राइमावेरा इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग द कोलैबोरेशन, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट टीम्स के साथ डिफरेंट कम्युनिकेशन पैटर्न के थ्रू डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसका फ्लो जो है वो डिसमिनेट कर सकते हो. तो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ providing you the API integration. If you have your own indigenous ERP software, you can integrate your ERP with the Primavera P6 version. And even if you are using the Oracle Primavera cloud solution, you can do the same sort of integration on that platform as well. So it depends that how you are actually going to do the collaboration. I'll give you an example. If you are using Microsoft project, so that Microsoft project is actually compatible with all Microsoft product, but that is not the case with Primavera. But still you can do leverage integration of your ERP solution with the Primavera P6 software. Last point which I need to discuss is reporting. So users can generate variety of reports, जिसके अंदर आपकी costing की reports आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी scheduling की reports आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी activity की progress reports आ जाती हैं. तो you can have insightful information available throughout your project life cycle, जिसको आप different project progress performance के हवाले से देख सकते हैं, या की evaluation for your project delivery perspective उसके हवाले से देख सकते हैं. Okay, so moving on to the next slide, we will find out or figure it out that what are the alternatives available in the market if we are not ready to go with Primavera P6. तो इसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. देर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स. अगर आप गूगल करें तो यू हैव टन्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल जो कि आपको ऑल्टरनेटिव फील प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक द फीचर्स द फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय Primavera. तो उसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आ जाता है. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो यू कैन हैव दैट यूज़र इंटरफेस दैट इज़ वेरी मच अलाइक, बिकॉज हम लोग वर्ड भी यूज़ करते हैं, एक्सेल भी यूज़ करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट होने के साथ बड़ी ईजी टू यूज़ है. बट
the hindsight is, जो ड्रॉबैक है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का, दैट इज़ फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट. आप उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग प्रोजेक्ट, द ह्यूज प्रोजेक्ट्स, द एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट, तो सॉरी टू से द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट टू यूज़. सेकेंड प्रोडक्ट आ जाती है आपके पास ऑल्टरनेटिव, जीरा. दिस इज़ Atlassian project, and this is one of the best product I have ever experienced. Primavera के आप इसको एडवांस फीचर के तौर पे ले सकते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर के तौर पे ले सकते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ हैविंग immense market share in terms of implementation and deployment. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं. एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और अक्रॉस इंडस्ट्री यूज़ हो रहा है जीरा, जिसके अंदर आपकी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एविएशन सेक्टर में, इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्निकल फील्ड में, आप यू कैन नेम इट. जस्ट लाइक प्राइमावेरा, द मार्केट शेयर इज़ ह्यूज फॉर जीरा, नॉट लाइक प्राइमावेरा जिसका मार्केट शेयर बहुत ही कम है इन द मार्केट. बट स्टिल Primavera P6 is a product which is giving you functionalities similar to Jira somehow to manage your enterprise projects. Third product had Trello. Trello is very user friendly interface kind of product where you can do project planning, project scheduling, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क एवेल्यूएशन. तो आप ये तमाम चीज़ें ट्रेलो में भी कर सकते हैं. बट लिमिटेशंस हैं इसमें ट्रेलो में. दिस इज़ नॉट लाइक है फॉर दी एंटरप्राइज लेवल सोल्यूशन. बेसिक जो आपके फीचर्स हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाते हैं ट्रेलो में. यू कैन यूज़ दोज फीचर्स टू मैनेज योर small and medium sized projects. Rike is another solution, same like Trello. You can have intuitive interface which is giving you a facility to manage your projects. So next on the list is Zoho Project Planner. Same like other small and medium size project. अगर आपका छोटा project है medium size तो आप Zoho Project Planner को use कर सकते हो. But still इसमें subscription model है. You can have that subscription model to pay for monthly or annual fee, and you can use that planner software for your own projects. इसमें limitations होती हैं, कुछ आपकी restrictions हैं. The more you add money, the more functionalities and privileges you have to use that Zoho Project Planner software. इसके अलावा मंडे है, स्मार्ट शीट है. ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इन द इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो फेजेस हैं उनको, लाइफ साइकिल को मैनेज किया जाता है. तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, बट ऑलवेज यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू विद द प्रोजेक्ट. अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आई विल प्रेफर गो विद जीरा और प्राइमावेरा. बट अगर स्मॉल साइज और मीडियम साइज है तो यू कैन यूज़ एनी अदर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स. The last slide is for the Primavera market. A Primavera market, as I already told you, the size of the market is just 2.54%. As you see on the right side कि Oracle Primavera जो आपका Enterprise Project Portfolio Management Software है, अगर आप इसकी market share की बात करें तो it has a 2.54 market share in the Project Portfolio Management category. जबकि आपकी Oracle Primavera Enterprise जो है वो 272 customers in the 10 countries, they are preferring to use Primavera P6 software. But as we speak, the percentage is growing, and there is an expectation within the project management portfolio industry that in the long run, like they have that growth in mind for the 7.6% in the next 10 years. So in 2030, this 2.54% of market share may go to 7.6% market share, which is a huge growth in terms of project portfolio management solutions category. अब इसकी कॉस्ट की बात करें तो प्राइमावेरा जो है वो कंपैरेटिव टू अदर सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपकी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरा बट आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स, ट्रेलो, इन तमाम से अगर कंपेयर करो तो ओरेकल का प्राइमावेरा P6 जो है, दिस इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव. इट विल कॉस्ट यू $2,570 एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो इसकी. बट इसके साथ आपको सिमिलर अमाउंट जो है, इतनी ही अमाउंट आपको मेंटेनेंस और आपकी अपग्रेडेशन की कॉस्ट मिला के वो भी आपको ऐड ऑन हो जाएगा. तो द सोल्यूशन इज़ लिटिल एक्सपेंसिव. It is not economical as if you go with other softwares, but the functionalities provided under Primavera P6 software platform, the
The functionalities are huge if you are managing the enterprise level project. So this cost is nothing. अगर आप एविएशन का प्रोजेक्ट ले रहे हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हो, अगर आप मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, स्पेस इंडस्ट्री की, अगर आप कोई स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बात कर रहे हो, तो दिस कॉस्ट इज़ नथिंग फॉर यू. So the more you pay, the better functionality and the better control you have over your project. So this video is all about the Primavera. अगर आप next videos के बारे में interested हैं, जिसके अंदर हम hands on experience आपके साथ share करेंगे, that how to install Primavera P6 software, where to install this software as a free version, to learn about the features and functionalities of Primavera. उसके अंदर आप किस तरह से उसकी स्केजुलिंग कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो. तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, support us and subscribe this channel for more upcoming informative videos. Till then, I'm signing off. Bye bye. Allah Hafiz.